वेलकम बैक। आज हमारे पास नेपाल से एक वीडियो आ रही है जिसमें ग्रेटर नेपाल और अखंड भारत के बारे में बात की जा रही है। और ये जो दोनों टॉपिक्स है इसके बारे में मैं कई सारी बातें आपके साथ कर चुका हूँ और कई सारी वीडियोस कवर कर चुका हूँ। इसमें हम देखेंगे कि ग्रेटर नेपाल पुराना या अखंड भारत। आप सबको पता है कि ग्रेटर नेपाल पृथ्वी नारायण शाह ने ही बनाया था 1550 से लेकर 1660 के टाइम पे, और फिर उसको तोड़ दिया गया था 1816 की सगोली की संधि के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं कि अखंड भारत के बारे में और ग्रेटर नेपाल के बारे में नेपाल का मीडिया क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों टॉपिक बड़े अहम है, आप लोगों को देखने पड़ेंगे, तभी आपको ग्रेटर नेपाल और अखंड भारत के बारे में कई सारी बातें पता चलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। Before I begin, I would like to clarify that this is just an analysis of the subject, not an endorsement of the Greater Nepal or Akhand Bharat. Still, if any of my words or facts offend anyone's emotions, I apologize. In other words, we always consider Nepal as a brother and we share a proud history and a religion and a lot in common. In India, we have our very own Nepali speaking community which numbers around 1.4 crore people, and their culture is being nurtured here as well. So we don't want to offend anyone. In addition to the commonly spoken language in India, Hindi scripts employ Devanagari, and the same as Nepali uses Devanagari for their language scripts. So in certain aspects, we are identical. So, day May 28, 2023, in India, a new parliament was inaugurated, which had new technology and capabilities. Glimpses are breathtaking, especially when compared to the other nations. But neighboring countries like Pakistan, Bangladesh and Nepal objected to the image that was installed in parliament, which was in general terms called as Akhand Bharat and Undivided India. Later, possibly on June 8, other picture became viral, known as Greater Nepal, emerged from the chamber of Kathmandu Metropolitan City Mayor Balendra Shah. And this started the social media rambles with each country's citizen insulting each other, which resulted in nothing. So let's find the presence of Greater Nepal and issues that were raised along with Akhand Bharat mural reality and the country's inner core. With the photo of Mayor's office, it raised the issue in India. Does Greater Nepal exist? So if you look closely at the Greater Nepal map, you will notice that includes numerous parts from North Bengal, Gorkhaland areas, Sikkim and even a few parts of Bangladesh in the east to Kumaon, Garhwal and few portions of Himachal in the west, as well as several places from the Uttar Pradesh, Bihar and Varanasi as well. This is essentially an overlay map of the Great Gorkha Kingdom during its peak in the late 1700s. Under the Prithvi Narayan Shah, and the Gorkhas ruled these Indian places for so many years. According to history, he had a vision to unite the kingdom rather than keep it in bits and pieces, but his desire remained a dream because he died in 1775 in Devighat, Nepal. Later, Bhimsen Thapa ensured that Gorkha continued to extend their area, and he was rapidly expanding until the British stepped in. Because Britishers needed to trade with Tibet and collaborate with them, but getting through Nepal was a problem. Later, the famous Anglo-Nepalese conflict occurred and they were defeated from numerous locations that are now in India, resulting in the Treaty of Sugauli. The boundaries of Nepal were determined in this treaty and many things were addressed and agreed upon, and these are the boundaries of Nepal even today. So basically, those are the areas represented in the Greater Nepal map, which was released by the Mayor office. Since Mayor Balendra Shah is a youth icon and leader who appears courageous, and a few people look forward to him as a potential Prime Minister, the photo quickly became popular on social media. Of fact, the mural has already been established in India. However, India's external ministry stated that it is from the Mauryan Empire of the Ashoka that people-oriented governance is represented. It says it depicts the spread of the Ashokan Empire and the idea of responsible and people-oriented governance. It is not meant to hurt anyone's feeling, and any aim of showing other countries in our territory comes entirely from history. After this clarification, the Nepalese protest was reduced and Nepal's PM Pushpa Kamal Dahal also visited India. But according to news agencies, nothing was talked about these remarks or any unintentional concerns. Despite the fact that Gorkha Kingdom was significantly larger than current Nepal and it was the king's ambition to unite the country, but this raises some question on a geopolitical level today, with parties such as Greater Nepal Nationalist Front still campaigning for the Greater Nepal. We believe that despite the lack of an official statement from Nepal's Prime Minister on the matter, they would understand the seriousness of the situation, which could have a major impact for both countries. Without a doubt, Nepal is a country with free will, but for the outside world, it appears like both countries, which are like brothers to each other, have strained relations, which is not the case. So instead of focusing on such concerns
lessons. Both countries should look forward to developing their own countries. It is preferable for young people to do a job rather than ramble on social media. On the other hand, India should be careful and avoid such things. And if they do post such things, they should send the message loud and clear and gain the trust of neighboring nations, because that is what a big brother do, understand sentiments truly. Well, the final decision is yours. Long live brotherhood. Thank you. It is Cultural heritage. Okay. our neighbor country, Okay. इंडिया हमारा छिमेकी राष्ट्र है। and secondly culture same है नेपाल का और इंडिया का कल्चर एंड नेचुरली भी इंडिया बहुत अच्छा लगता है मुझे। कोई उधर का तो मोदी है ना, मोदी वो हमारे केली बाग का दोस्त है वो। वहाँ का कल्चर ओके। हिंदी नहीं आती है। हिंदी नहीं आती है? बोल तो रहे हो, इसी को तो हिंदी बोलते जो तुम बोल रहे हो। एंड बॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड में स्वाद होता है। अच्छी लगती है। वहाँ का कल्चर। वहाँ का कल्चर। I have not been there, but also in movies I have seen. तो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, आपको पता चल चुका होगा अखंड भारत पुराना है या ग्रेटर नेपाल पुराना है। देखिए, अखंड भारत को ये कहा जाता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ करते थे तो उसको अखंड भारत बोला जाता है। और ये इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि 1816 के अंदर ग्रेटर नेपाल टूटा और उसके बाद जो है वो जितनी भी जमीनें थी वो इंडियन वाली साइड पे आ गई थी और उसके बाद ही सारा मामला स्टार्ट होता है। और ये मामला क्या है? ग्रेटर नेपाल और अखंड भारत का। ये इसलिए क्योंकि देखिए, आप सबको पता है कि ग्रेटर नेपाल को 1816 के अंदर तोड़ दिया गया था ब्रिटिश के जरिए और उन्होंने सगोली की संधि की। हमने ये बात करनी है कि हम जब भी हिंदुस्तान से वापसी जाएंगे आपको सारी जमीनें वापसी देंगे और फिर जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जब ग्रेटर नेपाल टूटा तो उसके बाद जो भी जमीनें थी, जो भी हिस्सा था, उसको अखंड भारत बोलते हैं। और ये अखंड भारत, इसको बनाने के लिए वापसी इंडिया हर जोड़ कोशिश कर रहा है और ये कह रहे हैं कि 2028 से लेके 2030 तक हमने नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर कब्जा करके इसको वापसी लेना है। भाई, जब वापसी लेना है तो तोड़ा क्यों? उसको वापसी जाने क्यों दिया? यही बात समझ आ रहा हूँ आपको। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि देखिए, ग्रेटर नेपाल की जो जितनी भी जमीनें हैं वो ग्रेटर नेपाल टूटने के बाद की बात कर रहा हूँ। 1816 में ग्रेटर नेपाल के टूटने के बाद जो भी जमीनें थी वो हिंदुस्तान तक आ गई, क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम पे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करता है। ओबियसली पाकिस्तान भी था उसमें, बांग्लादेश भी था। वो जमीनें थी वो 1947 से पहले की थी, तो उसको अखंड भारत बोलता है इंडिया। और जबकि ये बात कर रहे हैं इंडिया के भाई अखंड भारत ये हुआ करता था जब ग्रेटर नेपाल भी नहीं था, ग्रेटर नेपाल कभी हुआ ही नहीं करता था। वो लोग ये कह रहे कि अखंड भारत हुआ करता था, ग्रेटर नेपाल कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। जब मैप देखे जाते हैं, जब हिस्ट्री देखी जाती है, जब आपको सगोली की संधि नजर आती, तब आपको पता चलेगा कि ग्रेटर नेपाल पुराना है या अखंड भारत पुराना है। वैसे अगर हम बात करते हैं ग्रेटर नेपाल के बारे में, तो ग्रेटर नेपाल पृथ्वी नारायण शाह के टाइम पे 1550 से लेके 1560 के टाइम पे बना था, यानी आज से तकरीबन कोई 500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और अगर हम अखंड भारत की बात करें तो अखंड भारत अभी टूटा यार, जस्ट कोई 70, 75 या 80 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। तो बात यहाँ पे यह आती है कि भाई अखंड भारत पुराना नहीं है, जबकि ग्रेटर नेपाल पुराना है। और ग्रेटर नेपाल की बारे में इंडिया कुछ समझता ही नहीं है, समझता ही नहीं और बस ऐसे ही बोले जाता है। तो आज मैंने आपको सारी वीडियो बताई और आपको बताया कि कौन पुराना है, ग्रेटर नेपाल या अखंड भारत।